सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जेंडर इक्वालिटी, इम्प्लीकेशन फॉर पॉलिसी एक्शन। तो हम आज देखते हैं कि जो पॉलिसीज़ हैं डिफरेंट जेंडर इक्वालिटी की, उसमें हमारे पाकिस्तान में और इंटरनेशनली कौन कौन सी कमिटमेंट्स और कौन कौन सी पॉलिसीज़ पे उसमें इम्प्लीमेंटेशन पे तवज्जो दी गई। तो सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर इन रूरल पाकिस्तान इज़ कीनली शेप्ड बाय इश्यूज that relate directly to the role and status of women. While gender relation in rural Pakistan and influenced by a wide range of cultural, individual, and household characteristics that are often viewed as immovable barrier, जो बैरियर ख़त्म ही नहीं होते, जो बैरियर मूव ही नहीं हो सकते, to change, there is increasing awareness that underinvestment in women restrict economic growth and poverty reduction. The importance of enhancing gender equality and women empowerment in social and economic development. The government of Pakistan has pursued a range of policy initiatives to improve the status of women and address the issue of gender equality. These initiatives, although often well intentioned, have met with limited success to date. उसमें बहुत से ज़्यादा रीजंस हैं, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं कि सक्सेस किस वजह से लिमिटेड हो सकी. Internationally, Pakistan has signed on different commitments to empower the woman and to ensure gender equality. Pakistan has signed on Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women, जिसको CEDAW भी बोला जाता है, CEDAW, and the Beijing Declaration and Platform for Action. The Beijing Declaration highlights 12 critical areas of concern for gender equality and women empowerment, that are women and the environment, women in power and decision making, the girl child, women and economy, women and poverty, violence against women, human rights of women. Basically, women rights are the human rights. Education and training of women, institutional mechanism for advancement of women, women and health, women and the media, women and armed conflict. While in international agreements, Pakistan has committed to providing protection to women in these areas, the domestic legal framework remains far from promulgating these commitments in their full spirit. The government has pursued 4 major interventions area to date. Number 1, reducing the feminization of poverty, promoting gender equality through different programs and policies, ending violence against women, introducing legislation and changing legislative structure for women empowerment, के मुख्तलिफ किस्म के कवानीन को मुतारिफ करवाना, बिल को मुतारिफ करवाना, फिर जो एग्जिस्टिंग कवानीन है उसमें आल्ट्रेशन करके उसमें बेहतरी ला के उसकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर कराना. The first major policy initiative was the National Plan of Action for Women, was introduced in 1998, which mainly focused on education, health, economic empowerment, and other areas set forth in the Beijing Declaration. In 2000, the National Commission on the Status of Women was established as watchdog to examine policies for improving women's status and rights and to report cases of discrimination against women. ये इसके बाद जो नेशनल कमीशन था वो पंजाब कमीशन के नाम पे भी, पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, ये भी पंजाब लेवल पे भी इंट्रोड्यूस करवाया गया. नेशनल कमीशन नेशनल लेवल पे था, फेडरल लेवल पे था. 2 major initiatives followed a national policy for development and empowerment of women in 2002 and the mainstreaming of gender in the Pakistan
poverty reduction strategy in 2003. These policies focused on social, economic, and political empowerment and attempted to increase to access microcredit and livelihood improvement opportunities for the women. Another important initiative was Court for Women in Government Services and reserved seat in parliaments. कि पार्लियामेंट्स में भी सीट को रिजर्व करके ये भी इनिशिएटिव लिया गया और फिर जो पब्लिक सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें कोटे में भी इंक्रीज करके ये वाले इनिशिएटिव्स भी लिए गए. नेक्स्ट द जेंडर रिफॉर्म एक्शन प्लान, जिसको ग्रैप का नाम दिया जाता था, ये भी 2004 और 5 के दौरानिए में लॉन्च किया गया. Enhancing public sector employment for women, there has also been a focus on targeting women through safety nets by introducing programs such as Benazir Income Support Program. अब ये जो जेंडर रिफॉर्म एक्शन प्लान था, इसके डोमेन में भी बहुत सारी चीज़ें थी और बेसिक चीज़ें इसमें जेंडर मेन स्ट्रीमिंग ही थी. इसने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट और पॉलिसीज़ को जेंडर एनालिसिस करके उसमें जेंडर के सेगमेंट को इनकॉर्पोरेट करवाना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जो वुमेन का कोटा इंक्रीज़ करवाना वो इस के थ्रू करवाया गया, इसके थ्रू हुआ, इनके इनिशिएटिव में, इनके अचीवमेंट में वो शामिल है. फिर जो मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव है वो इनके इनिशिएटिव में शामिल है. फिर जो इक्वल वेज की बात हम करते हैं वो इनके इनिशिएटिव में शामिल है. फिर जो पुलिस कल्चर है, पुलिस कल्चर में थानों में, पुलिस स्टेशंस में विमेन का एक डेस्क लगवाना इनके इनिशिएटिव में शामिल है. तो इन शॉर्ट के बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव थे और ये बहुत हद तक कामयाब भी हुआ, लेकिन वक्त के साथ ये प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया गया. फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ये भी वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से चला. विजन 2025 फोकस ऑन एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय वुमेन इन पाकिस्तान एज पार्ट ऑफ इट्स डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी. In addition to all these programs, Pakistan took an initial step toward creating a safe, professional environment for women by introducing Protection Against Harassment of Women at Workplace Act in 2010. ये एक्ट का नाम था 2010, लेकिन ये एक्ट जो था बिल 2010 में पेश किया गया, लेकिन ये एक्ट 2011 में पास हुआ. ये एक्ट जो बना 2011 में बना, तो जिसके पिछले भी लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया. इसके बहुत ज़्यादा आगे इसकी डिटेल थी, जिसको लोगों तक डिसेमिनेट करना, वर्क प्लेस पे जो ख़वातीन हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन तक डिसेमिनेट करना बहुत ज़रूरी है. उन्हें पता होना चाहिए कि एक्ट में क्या है, वर्क प्लेस हैरेसमेंट क्या होती है, जब हैरेसमेंट हो तो कहाँ उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवानी है. इन 2011 द Prevention of Anti-Women Practices Act was passed as an amendment to Pakistan Penal Code to prohibit social practices such as forced marriages, marriage with Quran, deprivation of a female of her inheritance, and the giving away of female in Wani or Savara. The Criminal Law Amendment Act of 2011 addressed the issue of assault against women using coercive substance such as acid throwing के केसेस आपको पता है कि मुल्क में बहुत ज़्यादा हो रहे थे उस ड्यूरेशन में. तो वहाँ पे तब एसिड थ्रोइंग एक्ट को, जो ऑलरेडी एक्ट था क्रिमिनल लॉ में, उसको अमेंड किया गया. तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2011 एड्रेस द इश्यूज ऑफ जो था, दीज लीगल गेन्स फॉर वुमेन इन पाकिस्तान आर इनकरेजिंग. ये जितनी भी पॉलिसीज़ में, कवानीन में तब्दीलियाँ ला के उनको एड्रेस किया गया, उसमें अमेंडमेंट्स करके उनको एड्रेस किया गया, पॉलिसीज़ में जेंडर को इनकॉर्पोरेट किया गया, फीमेल राइट्स को सिक्योर किया गया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग है. इन सारी चीज़ों के बावजूद अभी भी हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, लेकिन हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं. कि इतने ज़्यादा इनिशिएटिव करने के बाद आज हम देखते हैं कि हमारी ख़वातीन बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं पहले की निस्बत, बहुत ज़्यादा कामयाब हैं पहले की निस्बत, बहुत ज़्यादा एम्पावर हैं पहले की निस्बत, इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट उनकी बहुत ज़्यादा है.
despite successive government's efforts to address issue of empowerment and these efforts to improve the socio-economic status of women, तो ये कुछ चीज़ें हमने जो डिस्कस की, जो पॉलिसी एक्शंस थे जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लिए वुमेन एम्पावरमेंट पे, जेंडर इक्वालिटी के, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे और उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं उसके हवाले से।